Okay guys, so before I start this session, एक बात कंफर्म कर लेना, थोड़ा ये बताना कि is the audio clear, video clear, is the audio clear, video clear and am I handsome? तीन चीजें कंफर्म करना, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है और मैं हैंडसम हूं। ये VH लिख लेना इधर, ये VH लिख लेना इधर। प्लीज राइट ये VH, ऑडियो इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर एंड आई एम हैंडसम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट TOC, लेट्स स्टार्ट TOC। ठीक है, so before I start the subject TOC, I will give you a brief overview about what is that we are going to spend time on. Okay, so what are the topics that we have? What are the topics? What are the topics that we have in TOC? So what are the topics that we have in TOC? In TOC, if you look at GATE syllabus, lot of things are given, but I can put them all together and write them in three simple statements. Okay, one is regular languages, one is regular languages, and two is context free languages. I will write the full form, you don't know that, right? And two is context free languages, context free languages, and then three is Turing machine, and then three is Turing machine. Okay, from here you will get 5 to 6 marks, from here you will get 5 to 6 marks, Turing machine you will get 1 mark, sometimes you don't even get 1 mark. Okay, so 60% of the syllabus will be about regular languages, 60%, 30% of the syllabus will be about context free languages, and 10% of the syllabus will be about Turing machine. That is how we have divided the timings. That is why we have divided the timings. Okay, so I'll be teaching this completely in English, don't worry. I will be teaching this in completely English. I will be teaching this completely in English, don't worry. So what are the books to refer? Books क्या refer करना पड़ेगा? Ullman is the book, and then Peter Lynch. Ullman is the book and then Peter Lynch. ठीक है? If you read Ullman, you will not understand even 10% of TOC. Ullman को छोड़ देना. If you read Peter Lynch, maybe you will understand 20% of the TOC. इसको भी छोड़ देना. Okay? I'm saying that don't read any textbooks for TOC. My notes is Bible for TOC. People say that my TOC notes is Bible for TOC. My TOC notes is Bible. My class notes is Bible for TOC. Guys, I have taught many subjects in many batches, many courses. In my entire life, in my 17 years of career, I have taught many subjects many times. But if you ask me, what is your favorite subject? It is TOC. And if you ask me, this series, this lecture series I am going to start on YouTube is going to be the best lecture series in my life. There will be no other series like this coming from me. This will be the best lecture series in my life. I want you to do one thing. All of you promise me one thing, that you will attend the live classes till the end, not the recorded classes. All of you promise me in the comments that you will continue the lecture till the last video and you will not give up. Live videos are going to be very fun compared to recorded videos. Don't watch recorded videos, watch the live videos. It will be very interesting. Okay? All of you write in the comments the promise. All of you tell me that you are promising me that you are going to watch the classes till the end. I want to see promises in the comments. Promise me, guys. I will give my best, you will give your best,
and whatever 12 marks you are going to get from TOC, 1 mark, even 1 mark you will not miss out. From my notes, all the questions will come. You will not even miss out 1 mark. Okay. So if you follow this series is going to be for 75 hours. Sometimes it may even get extended. 75 hours ka series hai. So you have to be very, very disciplined to follow the entire series. Promise me that you will not skip in the middle. If you start giving up, if giving up becomes your habit, you will give up on everything. At least promise yourself that, okay, I will do this course till the end. At least promise yourself that. Okay. No books. Don't read any books. Okay. Don't read any books. Instead of books, listen to songs. Jab bhi, whenever you get time, listen to good songs. Give me some sunshine. Give me some rain. Give me another chance. I wanna grow up once again. कभी कभी अतिथि जिंदगी में कोई अपना लगता है. Okay, listen to songs, not to, don't read any textbooks. My notes is the Bible. Okay, now I want to ask you few questions before I start TOC. ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. बाद में ना कहना कुछ भी, पहले दे दो वार्निंग. पार्टी चलेगी till 8:30 PM. ठीक है, ठीक है. तो now tell me option A, very basics to basics to medium to hard. Do you want this? Or do you want medium to hard? Or do you want directly to solve hard questions? A basics, B medium, C hard. What do you want? A B C में what is that you want? A B C में what is that you want? Everyone wants A. From very basics to medium to hard. Okay. No one has said B or C. So we will start from very basics. Okay. I will give you a challenge. You bring a 10th class student to my class. He will answer all the TOC questions. So even if you are from first year BTech, you will understand everything. In the class. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ठीक है. My teaching will be like music and your brains will dance with clarity. और जिसको डांस नहीं करनी है जाके अपना बैच चराए. ठीक है. Dance with me. I will be playing the music. दरवाजे को गुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए. RBR को समझाओ म्यूजिक, गलती से भी रुक ना पाए. टकर जो फील करे जाके 2 रेड बुल गटक ले. जिसको डांस नहीं करना है जाके अपना बैच चराए. Dance with me. I will be playing the music and you will dance with me. ठीक है. And in the first class it is just going to be introduction. Basics जो भी है वो सब I will teach you all the basics. And from the second class onwards, actual TOC problems will start. I will try to start the problems in the first class itself. I will try to cover the problems in the first class itself. Okay. Don't worry. My challenge is, if TOC does not become your favorite subject, आपने आपके career में mathematics पढ़ा होगा, आपका favorite, that might have become your favorite. Physics might have become your favorite. Chemistry might have become your favorite. And many computer science subjects might have become your favorite. But now I am telling you, throughout your entire life, you will never forget TOC, and TOC will be your favorite subject. Write down in the first page of your notes, TOC is going to be my favorite subject. And at the end of the course, see that page and you will feel that it is right. Okay. Write it down in the first page that TOC by RBR is my favorite course. ठीक है.
आप कभी टीओसी को नहीं भूलेंगे और ये गेट वाला को भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। दैट इज माई चैलेंज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट, लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट। तो व्हाट आर द बेसिक्स? बेसिक होता है सिंबल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बेसिक होता है सिंबल। सिंबल मतलब व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज एनीथिंग दैट यू कैन राइट, दैट इज ए सिंबल, राइट? A is a symbol, B is a symbol, 0 is a symbol, 1 is a symbol, capital A is a symbol, capital B is a symbol, so on, capital Z is a symbol, small a is a symbol, small b is a symbol, so on, Z is a symbol. Even you can use figures as symbols, है ना? Even you can use figures as symbols. These are all called symbols. हमने we will take some part of the symbols as alphabet, okay? तो sigma, we will take some part of the symbols as alphabet, okay? So let us say, and one more thing guys, please join the Telegram group. I will give you problems in Telegram. Please join my Telegram group and drop a message, good evening sir. Please open the Telegram channel. We are going to use Telegram channel throughout the course. I will give you problems and you will give me answers in the Telegram channel, okay? Please open the Telegram channel. RBR sir PW. RBR sir PW is the Telegram channel name. RBR sir PW is the Telegram channel name. If you are new to TOC, you will understand everything. If you have already done my course once, it will be good for revision. And जो भी मैं paid classes में पढ़ाया हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं इसमें पढ़ाता हूँ. I will teach you more difficult concepts and more difficult questions in this course, okay? So even if you are first timers or even if you have done TOC, no problem, you will enjoy the course, okay? Please join the Telegram channel RBR Sir PW and write a message. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है? एवरीवन गो टू टेलीग्राम चैनल एंड राइट द मैसेज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ओके? सो दैट एवरीवन विल नो दैट पार्टी हैज स्टार्टेड, ठीक है? ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड राइट द मैसेज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है? राइट इन द टेलीग्राम चैनल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एवरीवन राइट इन द टेलीग्राम चैनल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सो दैट all the remaining people will come to the class, okay? All the remaining people will come to the class. ओके, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेट्स स्टार्ट द पार्टी नाउ। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले दे दो वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 8:30 PM। 8:30 PM तक पार्टी चलता रहेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं 2 मिनट का ब्रेक दे सकता हूं। इफ यू वांट आई विल गिव यू 2 मिनट्स ब्रेक, अदरवाइज विल कंटिन्यू, ओके? तो व्हाट इज दी what is the how many days will it take to complete the course? I think by August 18th the course is going to be over. August 18th the course is going to be over, okay? Sigma equal to, पहले हमने सिंबल को डिफाइन किया। सिंबल, व्हाट इज अ सिंबल? सिंबल इज ए बी 0 1 ए बी सी टू जेड, ए टू जेड और सिंबल्स। और from the symbols I will take few symbols and put them in a set called sigma and I will call it as alphabet, ठीक है? तो I will take few symbols and I will call it as alphabet. I will call it as alphabet, ठीक है? Now once the alphabet is defined, you can do any number of strings using alphabet. Once the alphabet is defined, you can do any number of strings using alphabet. एक बार alphabet fix हो जाता है ना, strings आ जाएगा। string क्या होगा? A एक string होगा और B एक string होगा
नहीं तो ये भी एक स्ट्रिंग होगा. वॉट एवर स्ट्रिंग्स यू कैन फॉर्म यूजिंग ए बी दे विल बिकम स्ट्रिंग्स, है ना. S4 क्या हो जाएगा, ये बी होगा. लाइक दैट यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना. यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है. यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. नाउ लैंग्वेज बोलते हैं हम, लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलते हैं हम, लैंग्वेज. व्हाट इज ए लैंग्वेज? लैंग्वेज इज ए set of strings. Language is a set of strings, and these strings can be finite strings or infinite strings. These strings can be finite strings or infinite strings. मतलब a language can be finite language or infinite language, ठीक है. बट ए स्ट्रिंग इज ऑलवेज फाइनाइट. दिस इज ए गेट क्वेश्चन, ये गेट क्वेश्चन है, ठीक है. दिस इज आस्क्ड इन गेट, दिस इज आस्क्ड इन गेट. ओके, ए लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट एंड ए स्ट्रिंग कैन बी फाइनाइट, ए स्ट्रिंग कैन बी फाइनाइट. ए स्ट्रिंग इज ऑलवेज फाइनाइट. दिस इज आस्क्ड इन गेट एग्जाम. ओके, गेट एग्जाम में this simple question has been asked. Okay, this simple question has been asked. Now I will say that we are using two symbols a comma b. Alphabet says that what are the symbols that we are using. I will say that we are using two symbols a comma b. I will say that we are using two symbols a comma b. Okay, and now I will define a language. The language is, let us say ABBA. इसके मतलब क्या है? What is the meaning of this? This language contains two strings A, B and BA. This language contains two strings A, B and BA, right? If I say that L equal to set of all languages, L equal to set of all strings, set of all strings starting with A, set of all strings starting with A, set of all strings starting with A. If I say set of all strings starting with A, then what will the language be? The language will be A is starting with A, AB is starting with A, AAB is starting with A, AAAA is starting with A, and so on, and so on. For those people who already know TOC, can you draw the DFA for this and post it in the Telegram? Draw the DFA. Those who already know TOC, I just want to test where your level is. Are you at a very basic level or do you know anything? Draw a DFA for set of all strings accepting L1. Set of all strings starting with A. Take a picture of it and post it on Telegram. I will open Telegram and see what is the level you are in. Okay. Take a diagram and post it in Telegram. Take a diagram and post it in Telegram. Set of all strings starting with A. Take a diagram and post it in Telegram. ओके, ऑलमोस्ट सही है. एक ही आदमी ने आंसर किया है, वो गलत है. तो आई थिंक नो वन इन द क्लास नोस एनी बेसिक्स ऑफ TOC. देन वी विल गो फ्रॉम बेसिक्स. ओके, then we will go from basics. Soham, your answer is right. Soham, your answer is right. Gutle, your answer is not right. What is that name, Gutle? Change the name, please. Gutle is not a decent name. ठीक है? Change the name, please. ठीक है? And then Utkarsh has given the right answer. Utkarsh has given the right answer. And there are wrong answers also. I will explain you. तो एक काम करते हैं. Let's go from very basics. You are not able to understand. Let's go from very basics.
बेसिक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज ए डीएफए? डीएफए करने के बाद हम एक बड़ा सा डायग्राम लिख लेंगे। अगर रेगुलर लैंग्वेजेस है, अगर रेगुलर लैंग्वेजेस है तो उनके लिए होता है एक्सेप्टर्स। एक्सेप्टर्स होता है, वो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, और फाइनाइट ऑटोमेटा होता है एप्सिलॉन एनएफए, एनएफए और डीएफए। एप्सिलॉन एनएफए, एनएफए और डीएफए होता है। और रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए रिप्रेजेंटर्स होता है, रिप्रेजेंटर्स होता है, और वो रिप्रेजेंटर्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रिप्रेजेंटर्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। और रेगुलर लैंग्वेज के लिए होता है जनरेटर्स। जनरेटर्स होता है। और आपको ये पूरा ग्रीक एंड लैटिन लगेगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। समझ में नहीं आए तो मैं एक एक चीज लेके इन डिटेल बताऊंगा। एक एक चीज लेके इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। जनरेटर्स होता है ग्रामर्स। जनरेटर्स होता है ग्रामर्स। रेगुलर लैंग्वेज का जनरेटर्स होता है ग्रामर्स। और एक चीज भी है, ट्रांसड्यूसर्स बोल के होता है। ट्रांसड्यूसर्स बोल के होता है, वो होता है मूरे मशीन एंड मीली मशीन। दिस इज द एंटायर सिलेबस। मूरे एंड मीली, दिस इज द एंटायर सिलेबस ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। मैंने इधर दिया था ना आपको, रेगुलर लैंग्वेजेस है 60% ऑफ द सिलेबस, और वो 60% ऑफ द सिलेबस में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी। अभी आपको ये सब नया लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आज एक क्लास का मौका देना मुझे, मैं बताता हूं ये कितना सिंपल है, ये सारा चीज है, ठीक है। ठीक है। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो आरबीआर कर लेगा हैंडल, ठीक है। लेट्स सी डीएफए गाइस, लेट्स सी डीएफए, है ना। डीएफए इज represented as sigma delta q naught f. DFA is represented as q भी डाल देंगे, q सिग्मा डेल्टा q नॉट f। मतलब क्या है ये DFA, क्या है देखना एक बार। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये स्टेट नंबर ये है, और ये ए इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट है ये स्टेट नंबर बी है, ये फाइनल स्टेट है, ये स्टेट नंबर सी है, ये स्टेट नंबर सी है, ये स्टेट नंबर सी है, ए कामा बी। पहले क्लास थोड़ा सा ग्रीक एंड लैटिन लगेगा, ये एक बार आप फ्लो में आ जाते हो ना, इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि भाई जो भी क्वेश्चन गेट में टीओसी में पूछेंगे, विद इन 30 सेकेंड्स आप आंसर कर सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। जो भी टीओसी क्वेश्चन गेट में आएगा, विद इन 30 सेकेंड्स आप आंसर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके पास रखना, गेट के एग्जाम के बाद मेरे पास आना, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बार बेसिक्स होने से बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इट विल बी वेरी सिंपल when it is in basics, once you have covered basics. Oh, okay. Sometimes I forget which language I am teaching in. I think I am going I think I am going in Hindi. Please excuse me, I'll come back to English, okay? So guys, so guys,
ठीक है गाइस, अभी ना Q, what is Q? Q is finite set of states. Q, what is Q? Q is finite set of states. Either finite है ना, that is why this is called DFA, deterministic finite automata. DFA, what is the meaning of DFA? The meaning of DFA is deterministic finite automata. Deterministic finite automata. The meaning of DFA is deterministic finite automata, है ना? Now deterministic finite automata contains Q, sigma, delta, Q naught and F. What is Q? Q is finite set of states. Q होगा finite set of states. And what is sigma? Sigma is nothing but input alphabet. इधर लिखेंगे ना इसमें. In this example, what is Q? In this example, Q is A, B and C, final set of states, है ना? And what is sigma? Sigma is input alphabet A, B. Sigma is input alphabet A, B. Sigma क्या है? Finite set of symbols है. Sigma is finite set of symbols. Sigma is finite set of symbols. Sigma is finite set of symbols. Okay. Sigma is finite set of symbols. Sigma is finite set of symbols. How can I see how many people? Acha, okay. Sigma is finite set of symbols. है ना? What is delta? Delta is called transition function. Delta is called transition function. Delta is called transition function. Or what is the specialty of delta in DFA? On seeing a state and on seeing a input, it will go to exactly one state. और एक बार, let me repeat it one more time. On seeing a input, on seeing a state, on seeing a input, we will go to exactly one state. On seeing a input, on seeing a state, and on seeing an input, we will go to exactly one state. I will take the example and explain you. For now, just write it down. I will make everything clear. Okay? And what is Q naught? Q naught is the initial state. Q naught is the initial state. What is Q naught? Q naught is the initial state. In this example, what is initial state? In this example, the initial state is A. इसके मतलब क्या है? What is the meaning of it? Q naught equal to A is the meaning of it, है ना? Now what is F? F is a set of, we can write finite set. F is a finite set of final states. F is a finite set of final states, है ना? तो F is a set. If you look at Q naught is not a set. It is a simple element. A is the initial state. If you look at F is a final set of final states. तो F में क्या होगा? Only B होगा. ठीक है? Now you understood everything. This is a diagram which is called a DFA. इसमें what are the states? A, B, C states are there. And what is the input symbol? A comma B is the input alphabet. And delta I will explain you clearly. And what is the initial state Q naught? Q naught is A. And what is the final state? Final state is B. Final state is B. Okay. Now let us see in detail what is the transition function. Let us take the same diagram. Let us take the same finite automata. 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 ठीक है? Now, what is delta in DFA? Delta is a function from Q cross sigma to Q. ठीक है? Now tell me what is Q here? The Q here is A, B and C. है ना? And what is sigma here? Sigma here is A comma B. है ना? Now you take the cross product.
Q cross sigma. You take the cross product Q cross sigma. What do you get? You get AA, and you get AB, and you get BA, and you get BB, and you get CA, and you get CB. What did I do? I didn't do anything extra. I didn't do anything extraordinary. By गेट कंप्यूटर साइंस मतलब गेट CS है ना. एक बात ध्यान से सुन लेना. Everyone listen to this. गेट CS is not गेट कंप्यूटर साइंस. गेट CS is गेट कॉमन सेंस. अगर आपका कॉमन सेंस है, if you have common sense, you can answer any question. GATE CS stands for GATE common sense. It does not stand for GATE computer science. Okay, ये याद रखना. And किस महान आदमी ने बोला है इसे? वो महान आदमी RBR हूं, मैं बोल रहा हूं कि GATE CS is common sense. GATE CS is common sense. ठीक है. तो भाई अभी Q क्रॉस सिग्मा टू Q बोल रहा हूं ना. आई एम सेइंग डेल्टा इज ए फंक्शन फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू Q. तो Q क्रॉस सिग्मा, व्हाट आर देयर इन Q क्रॉस सिग्मा? A is there, A is there, AB is there, BA is there, BB is there, CA is there, CB is there, है ना? And from here we are going to Q. What is Q here? Q is A, B, C. Okay. Now what is the relationship between these two? Capital A on seeing small a, capital A on seeing small a is going to B. Capital A on seeing small a is going to B. And capital A on seeing small b is going to C. Capital B on seeing small c is going to B. Capital B on seeing A and B is going to B only. है ना? On seeing A and B is going to B only. And capital C on seeing A and B is going to C only. On seeing A and B it is going to C only. Okay? Simple है. This is DFA. Agar, if you want me to explain DFA in simple words, if there is any diagram like this, for every state, there should be exactly one transition for every symbol or ek bar. I will write it down better, okay? So DFA, what is DFA? In a DFA, for every state, there will be one transition, on every symbol, okay, on every symbol. Now I will give you a diagram which is called state transition diagram. एक काम करते हैं. Now we will also, this is called, ये जो डायग्राम हमने लिया है ना, ये जो डायग्राम, whatever diagram we have taken, this is called state transition diagram. This is called state transition diagram. इसे बोलते हैं state transition diagram. I can also make one more diagram called state transition table. Easily लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ? I will write A, I will write B, I will write C. Whenever any state is having double circle, that is called final state. जब भी आप, whenever you see a state with double circle, that is called final state, okay? And whenever you see a arrow like this, that is called initial state. Now what is initial state? A. What is the final state? B. And C has no significance. C has no name. A is the final state, A is the start state, B is the final state, okay? So on A and B, where is it going? Capital A on small a is going to B, है ना? Capital A on small a is going to B, and capital A on small b is going to C. Capital A on small b is going to C,
and capital B on small a and small b is going to be, capital B on small a and small b is going to be, capital C on small a and small b is going to C. This is called state transition diagram. Now, given a state transition diagram, how will you know that it is a DFA? Always remember that inside the table there should be exactly one symbol. Inside the table there should be exactly one symbol. If there is exactly one symbol, then you can say that it is DFA, है ना? Now you have to indicate in the state transition table what is the initial state and what is the final state. Okay, you have to indicate in the state transition table what is the initial state and what is the final state. ठीक है? So A is the initial state, B is the final state. A is the initial state and B is the final state. Okay, A is the initial state and B is the final state. Okay, okay, this is all about DFA. Now you have learnt about DFA. If I give you a diagram, you should be able to say whether the diagram is DFA or not. Sigma equal to A comma B. Now I will give you a DFA, say whether it is a DFA or not. I will give you a machine. I will give you a machine. Now say whether this machine is DFA or not. Now say whether this machine is DFA or not. Is this machine a DFA? कमेंट में आंसर करना, नहीं तो टेलीग्राम खोल के भी आप बोल सकते हो. कमेंट में आंसर करना, नहीं तो टेलीग्राम में भी आप आंसर कर सकते हो. Is this a DFA? Is this state transition diagram a DFA? Is this state transition diagram a DFA? कमेंट्स में लिखना. Please write in the comments, is this state diagram a DFA? Is this state diagram a DFA? Very good. It is not a DFA. I am not able to see your comments. This is not a DFA because it is incomplete, है ना? This is not a DFA because it is incomplete. Sir, I need discrete mathematics for this course. There is no need of discrete mathematics for this course, right? Why is it not a DFA? If you look at it here, you are not defining on what happens on B. You are saying what happens on A, but you are not saying what happens on B. If you look at B, you are saying what happens on A and B. But if you look at B here, you are not saying what happens on B. है ना? That is why this is not a DFA. That is why this is not a DFA. Now, if I give a DFA like this, if I give a finite automata like this, can you tell me whether this is, if I give you something like this, can you tell me whether this is DFA or not? Can you tell me whether this is DFA or not? Tell me whether this is a DFA or not. Tell me whether this is a DFA or not. Tell me whether this is a DFA or not. Tell me whether this is a DFA or not. It is not a DFA. Why? Because capital A on small a is going to A as well as capital A on small a is going to B. A पे जा रहा है, B पे जा रहा है, multiple edges है. That is why this is not a DFA, है ना? DFA का पूरा हमने कर लिया है. Now let us see non-deterministic finite automata. Let us see non-deterministic finite automata.
What is non-deterministic finite automata? NFA. NFA में भी सेम होता है. NFA में Q होता है Q sigma delta Q naught F. Q sigma delta Q naught F होता है. ठीक है. So you can take an example like this. You can take an example like this. A comma B and then B. है ना? ये and then ये. Some diagram I have taken. Okay. Some diagram I have taken. Now Q is same. Q is same as DFA. Set of all finite number of states. Sigma is same, Q naught is same, F is same, right? What is changing? What is changing is delta. In NFA, delta is a function from Q cross sigma to 2 power Q. Delta is a function from Q cross sigma to 2 power Q. First let us compute 2 cross sigma, then we will go to 2 power Q. ठीक है? First let us compute 2 power sigma, then we will go to, let us continue Q cross sigma, then we will go to 2 power Q. Okay. So what is Q here guys? इसमें Q है A comma B is Q. A comma B is Q. A comma B is Q है ना? And then what is sigma? Sigma is A comma B. What is sigma? Sigma is A comma B. Now what is Q cross sigma? Q cross sigma में क्या होगा? What will be in Q cross sigma? It will be capital A small a, capital A small b, capital B small a, capital B small b. This is Q cross sigma, है ना? So we will write Q cross sigma here. What is Q cross sigma? Capital A small a, capital A small b, capital B small a, capital B small b, capital B small b. Now Q cross sigma is a function to 2 power Q. What is 2 power Q? 2 power Q is power set of Q, है ना? So what is Q here? Q is A comma B. Then what is 2 power Q guys? 2 power Q is set of all. 2 power Q is set of all subsets of the Q. तो क्या आएगा set of all subsets में? empty set आएगा, A आएगा, B आएगा और ये भी आएगा. empty set आएगा, A आएगा, B आएगा और ये भी आएगा. तो इधर क्या आएगा भाई? What do you get here? Empty set, and you will get A, and you will get B, and you will get AB. Okay. Now look at the diagram. Capital A on small a is going to A and B, है ना? Capital A on small a is going to A and B, है ना? And then capital A on small b is going to A. Capital A on small b is going to A. And capital B on small a and small b not going anywhere. मतलब empty set. ठीक है? Now this is called NFA. तो NFA में क्या होगा? NFA में for every state, for every symbol, we may get, for every state, for every symbol, we may get 1, we may get 0 or 1 or more transitions. 0 or 1 or more transitions. You will understand it if I draw the diagram, state transition table. So what are the states here guys? A and B. A is the initial state, B is the final state. Initial state को arrow डालूंगा, final state को star डालूंगा. और what are the input symbols? A and B. Now where is A going on? A is going on A to A comma B. 2 states में जा रहा है. And what is A going on B? It is going to A. And what is B going on A? Nowhere. If you observe this, a state is going to 2 states by making multiple copies of itself. A state is going to 1 state.
or a state is not going to any state. A state is not going to any state. A state is not going to any states. ठीक है? Okay. This is about NFA. We have covered DFA and we have covered NFA. Now I will give you a diagram. इसमें ना there is a small thing that you need to understand here. Let us take this same diagram. Let us say this is the NFA. Let us say this is a NFA. ठीक है? Let us say this is a NFA. Now what is the delta? Delta is q cross sigma to 2 power q. है ना? In NFA, delta is q cross sigma to 2 power q. And in DFA, अगर DFA देखेंगे, if you look at DFA is delta in DFA delta is q cross sigma to q cross sigma to q. Q cross sigma to q. है ना? Now what does that mean? Here if you take AB as q, what is there in 2 power q, guys? Empty set is there, A is there, B is there, and AB is there. है ना? Now if I take q, what is there in q? AB is there. Now compare these two. In the definition of NFA, DFA is also covered. है ना? You have A and B here. In the definition of NFA, DFA is also covered. So what can you say? Every DFA is also an NFA. Why? Because NFA has the capability of covering DFA also. So I will tell you a secret. किसी को मत बताना, चुपचाप लिख लेना. किसी को मत बताना, चुपचाप लिख लेना. Secret क्या है? Every DFA is a NFA. Every DFA is an NFA. Every DFA is an NFA. चुपचाप लिख लेना. Every DFA is an NFA. चुपचाप लिख लेना. ठीक है? Every DFA is an NFA. ठीक है? अब आपको ना ये देखने से लगता है कि अरे भाई NFA में ज्यादा है, DFA में कम है, तो NFA का पावर ज्यादा हो सकता है. नहीं भाई नहीं. NFA and DFA will have same power. NFA and DFA will have same power. I will tell you one more secret. चुपचाप notes में लिख लेना. Write down in your notes silently. Don't show it to anyone. The secret is power of NFA is equal to power of DFA, and it is less than power of RBR. It is less than power of RBR. RBR is more powerful than DFA and NFA. लिख लेना, अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत हंसी आ जाएगा. भाई जिंदगी को कभी सीरियस मत लेना. We are not going to get out of this life alive. Again, we are not going to get out of this life alive. Everyone has to die. Don't take it too seriously. थोड़ा गाना, थोड़ा नाचना, एंजॉय करना सीखो. ठीक है? My teaching is a music and your minds will dance to my tunes. और जिसको डांस नहीं करनी है जाके अपना बैस चलाए. ठीक है? I don't think that most of you know English song, हिंदी songs. एक बार ये song सुन लेना. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Most of you are from South India, so you don't know this song. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ये song एक बार सुन लेना. ठीक है? ठीक है भाई? तो इसको नोट्स में लिख लेना, मजा आएगा. ओके? you'll get you will enjoy. Okay? You will enjoy. Okay guys, so now I will give you diagrams. Tell me whether they are NFA or DFA. ठीक है? Tell me what is this, NFA or DFA? Tell me what is this. Is this NFA or DFA? Tell me what is this. Is this NFA or DFA? Sigma is A comma B. Sigma is A comma B.
Is this NFA or DFA? There are no prerequisites for TOC. If you are a first year student starting GATE preparation, this is the best course to start with. You don't need mathematics, you don't need discrete mathematics, you don't need anything. I will teach everything from basics in the course. You don't have to know anything. There are no prerequisites for this problem, for this language. Okay? So what is this? So you can say that this is DFA for every state, for every transition it is defined. But then the safest answer is every DFA is a NFA, hai na? Every DFA is a NFA. If I give you like this, if I give you something like this, if I give you something like this, what is this? The safest answer is whatever finite automata is given, first say it is NFA, it will be true. Then check if it is DFA. For this state, B is not defined. For this state, B is not defined. Therefore, this is not DFA, this is NFA. I think you understood what is DFA and NFA now. Hai na? What is DFA and NFA now? For a DFA, everything should be defined. For a NFA, everything need not be defined. Okay. Now, let me tell you something called as regular expressions. Let me tell you something called as regular expressions. Okay. What is a regular expression? Regular expression में operators होता है. There will be operators in regular expression. Plus is for union, plus used for union, and a dot is for concatenation, and a dot is for concatenation, and star is used for clean closure. Star is used for clean closure. Okay, I will tell you what each one of them. Okay, and then phi, sigma. Acha, I have to tell you something before I go here. Okay, let us say sigma, let us say sigma equal to a comma b. ठीक है, let us say sigma equal to a comma b. What will be sigma square? Sigma square will be a comma b followed by a comma b. What will you get? You will get a b, ba, bb, है ना? So sigma square is set of all strings of length 2, है ना? Set of all strings of length 2. If I write sigma cube, what do you get, guys? A comma b followed by a comma b. Okay, so what will you get? A so on, b b. इसका लेंथ क्या होगा? Set of all strings of length 3. मैं, if I write sigma power n, what will happen? If I write sigma power n, then I will get set of all strings of length n. Set of all strings of length n. है ना? Now, if I take union of all this, now there is a special symbol sigma power 0. Sigma power 0 is string of length 0. This is a special symbol. String of length 0. Sigma power 0 is string of length 0, which is called epsilon. So, epsilon is a special symbol whose length is 0. Sigma power 0 is string of length 0, which is called epsilon. Epsilon is, length of epsilon is 0. You have to remember this. Now, if I take union of all this, if I take sigma power 0, union sigma power 1, union sigma power 2, union sigma power, so on, sigma power n, so on, what do I get? I will get set of all strings possible over a comma b, right? I will get 0 length string, I will get 1 length string, I will get 2 length string, I will get 3 length string, I will get everything, है ना? So this is called sigma star. Sigma star means set of all strings possible over sigma. This is also called universal language. This is also called
यूनिवर्सल लैंग्वेज, है ना। तो इन प्लेस ऑफ स्टार, व्हेन आई राइट सिग्मा स्टार, इन प्लेस ऑफ स्टार, in place of star you can put 0, you get epsilon, you can put 1, you can put 2, you can put 3, you can put 4, so on. So sigma star is universal language which is going to generate set of all strings over sigma, that is called sigma star. Okay. Now in regular expressions, what are the operators? Union is there, concatenation is there, clean closure is there. Just now we have seen clean closure. What is union? If I write A plus B, it is nothing but A union B. है ना? If I write A dot B, it is nothing but AB. If I write A star, what is the A star? In place of star, you put 0, you get A power 0, and in place of star you put 1, you get A power 1. In place of star you put 2, you get A power 2. In place of star you put 3, you get A power 3. In place of star you put n, you get A power n, so on, so on. है ना? है ना? So A star is A power 0 is epsilon, A power 1 is A power 2 is A power 3 is A, so on. That is about clean closure. And phi is the empty set, phi represents empty set, and epsilon represents only epsilon. अगर मैं regular expression ऐसा बोला है, if I say that regular expression is epsilon, if I say that regular expression is epsilon, it means that the language generated is containing only one string, that is epsilon, है ना. And then small a comma small b, जो भी symbols है sigma में, they are also regular expressions, right? Now the second rule is, don't worry about it, this is all Greek and Latin, we will go into problems, you will love it. अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, ठीक है. Party is going to start now. Let me just finish the basics. Once the basics is over, trust me, you are going to love this class. You are never going to forget this class, okay? Keep your Telegram channel ready and keep a notebook and pen. I will ask you questions. You are going to click the picture and post it in the Telegram. I will analyze your answers, okay? So what is rule number B? Rule number B says, if R1 comma R2, if R1 comma R2 are regular expressions, if R1 comma R2 are regular expressions, then R1 plus R2, R1 dot R2, नहीं तो R1 star is a regular expression. I am 100% sure, मैं लिख के देता हूं, आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है. ये डेफिनेशन है, करना पड़ता है. एक बार कर लिया, खत्म हो गया, आप इसको भूल जाना. मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है. I am very sure that I will speak in Hindi and English, both the languages. Don't worry. You will not understand anything from this. I am very sure that you didn't understand anything, but with problems I'll be able to explain you everything. Okay, let me take problems and explain you. अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Let's start the party now. Okay, let's start the party now. Now sigma equal to A. There is only one symbol in the language. I want you to draw a DFA which accepts only one string A. Okay. So the question is, draw a DFA that accepts, only one string, that accepts the language A, that accepts the language A. आप सोचेंगे कि इतना छोटा सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया है भाई? This is not a small question. You must be thinking why I have given you such a small question. Trust me, this is not a small question. Not everyone is going to answer this. Open Telegram channel. Open Telegram channel and put your answers there. Open the Telegram channel and put your answers there. Draw it and put it. Someone has already did it. Soham, very good.
वेरी गुड भाई, यू आर वेरी फास्ट। सोहम, संदीप थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है आपने, सही है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। हम्बल गाय सही है। हम्बल गाय आपने स्टार्टिंग विथ ये हम्बल भाई, हम्बल गाय आपने क्या किया है, ए को एक्सेप्ट किया है और ए को रिजेक्ट भी किया है। नो वन इज गुड, नो वन इज गुड एंड ठीक है। सो नो वन इज एबल टू आंसर दिस। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आरबीआर सर ने बोला कि अल्टीमेट टीओसी कोर्स है। आरबीआर सर हैज सेड दैट इट इज अल्टीमेट टीओसी कोर्स, but he has given a very simple question. But can you see in telegram, no one has answered this question. No one, कोई आंसर नहीं किया, सिर्फ एक आदमी ने आंसर किया। only one person has answered this. Only one person has answered this. ठीक है, let us see this. We have to accept only a, right? I will start from the initial state a. I will start from the initial state a, and on seeing a small a, on seeing a small a, I will go to the state b and I will accept a, right? अभी क्या हो रहा है भाई? What has happened now? On seeing a small a, I am starting from a and I am going to b and I am accepting it. But this is not a DFA. Why is it not a DFA? In sigma we have symbol a. In sigma we have symbol a. There is a symbol a in sigma. There is a symbol a in sigma. For capital A, you said what should be done on A. For capital B, you didn't say what should be done on A. What happens if I get one more A? I will be getting two A's. I should not accept it. I will be getting two A's. I should not accept it. Even if I get more number of A's, I should not accept it. So what happens here, guys? If I give A, then what happens? I will start from A, I will go to B, I will go to C. From B on seeing A, I will go to C, which is a non-final state. That is why this is not accepted. Only single A is accepted. Only single A is accepted. मजा आ रहा है क्या भाई? Are you enjoying the classes? Loving the classes? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है? तो guys, now if you see this, A is the initial state, A है initial state and B is the final state. A is the initial state, B is the final state, and a standard nahi hai. I call it as a dead state, but a standard term, this is not the standard terminology. I will call C as dead state. I will call C as dead state. Okay. What is the meaning of dead state? What is the meaning of dead state? A state from which you cannot reach the final state. Write down the definition. Dead state is a state from which we cannot reach, a state from which we cannot reach final state. We cannot reach final state. A state from which we cannot reach final state. A state from which we cannot reach final state is called dead state. Dead state is a state from which we cannot reach final state. We cannot reach final state. ठीक है? Dead state is a state from which we cannot reach final state. ठीक है? और डार्लिंग ने आंसर किया है। डार्लिंग का आंसर ये था, A is accepted, and then if a B comes, actually B is not in the language, right? I have clearly said that sigma equal to A. Why are you writing B, darling? डार्लिंग ने आंसर किया है कि B को भी लेके, but B is not there. If B is there, you are right, darling. ठीक है? If B is there, you are right. Okay? तो now do a small question. इधर ना, this is a DFA. Why? For every state, for every input, I have told what has to be done. This is a minimal DFA.
Why am I calling it as minimal DFA? Because I know that आपको पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि you don't know it now, but later you will come to know that this is a minimal DFA. Later you will come to know that this is a minimal DFA. Forget it for now. Now there is a dead state. From a minimal DFA, if I eliminate the dead state, I get the minimal NFA. I get the minimal NFA. So what is the minimal NFA for this, guys? The minimal NFA is simply going to be A, B. The minimal NFA is simply going to be this. This is the minimal DFA. This is the minimal DFA, this is the minimal NFA. What is the regular expression? अगर लैंग्वेज में एक ही स्ट्रिंग है ये, if the language has only one string A, right? Regular expression is going to be A. Regular expression is also going to be A. If the language has only one symbol A, regular expression is also going to be A. है ना? This is the DFA, this is the NFA, this is the regular expression. This is the regular expression. I want to show you something before going ahead. I want to tell you when a string is accepted by a finite automata. I want to tell you I want to tell you when is a string accepted by a finite automata. Let us assume that capital A is a state, small a is a input, capital B, A comma B, and small b, C, A comma B. ठीक है? Now if I give a string A, B, B, what will happen? I will start in initial state. State on seeing A is going to B on seeing A is going to B, and B on seeing B is going to B, and B on seeing B is going to B. है ना? So we have started from initial state and we are able to reach the final state, therefore this is accepted. When will we say a string is accepted? If we start from initial state and scan the entire string, and if we reach the final state, a string is said to be accepted. Okay, so if I write like this, A, I will give you some string B, A, B. Okay, if I start from initial state A, on seeing B I will go to C, on seeing A I will go to C, on seeing A I will go to C, on seeing B I will go to C. Now starting from the initial state, on seeing the entire string, on scanning the entire string, I am able to reach the non-final state. That is why this is rejected. Whenever you go to non-final state, we reject it. Whenever we go to final state, we will accept it. Okay, we will accept it. Okay, we will accept it. Okay, ठीक है? Now half the time is over, so I will give you a problem. I'll give you a problem. Sigma equal to A, L equal to AA. Language has only string AA. Draw the DFA. I want minimal DFA and I want minimal NFA, and I want regular expression. Write it in the telegram. आपका आंसर जो भी आया है, write it in the telegram. Dead state is also called trap state. Dead state is also called trap state.
ऑलमोस्ट सब लोग ने सही किया है, उत्कर्ष ने थोड़ा सा गलत किया है। उत्कर्ष का आंसर थोड़ा सा गलत है, सब लोग सब सही किया है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज आंसर्ड। दिस गाय अनिरुद्धा हैज आंसर्ड दिस। अनिरुद्धा का आंसर है ये ठीक है भाई, और ये दो येस को एक्सेप्ट किया है। और अनिरुद्धा ने ये किया है, अगर बी आया तो डेड स्टेट, अगर बी आया तो डेड स्टेट, अगर बी आया तो डेड स्टेट, और ए कामा बी आया तो डेड स्टेट। लेकिन इसमें गलती क्या है भाई? गलती ये है कि my what is the problem here? The problem is that a is not in the, only a is in the sigma, b is not there. Why are you doing for b? I have not given b in the sigma, b should not be there at all. Okay, other than that everyone has done easily. So you have to accept two a's, draw the DFA that accepts two a's, one a and one a. Draw the DFA that accepts two a's, है ना? Let's call them as A, B, C. A is complete. We have said what happens on small a. B is complete. We have said what happens on small a. But C is not complete. We didn't say what happens on small a. If I get one more a, it is nothing but 3 a's. You should not accept it. If I get even more a's, you should not accept it. So this is called dead state or trap state. This is called dead state or trap state. This is called dead state or trap state, and this is the minimal DFA. This is the minimal DFA. Okay. Now in order to get minimal NFA, eliminate the dead state. You eliminate the dead state, you are going to get minimal NFA. Eliminate the dead state and we are going to get minimal NFA. And we are going to get minimal NFA. Almost everyone has answered it right. और ये थोड़ा सा गलती किया है अमित चौहान ने। अमित चौबे का आंसर है ये है। अमित चौबे हैज गिवन ये, he has accepted ये, fine, but he has used this loop ये. What is the problem of this? ये is accepted, again ये is accepted, है ना? 2 a's are accepted, 3 4 5 a's are accepted. देखना, ये is accepted, and then ये is accepted, ये is accepted. देखना, ये is accepted, ये is accepted, and then ये है ना? ये which means he is accepting more states, है ना? सबकी सही है, everyone is done right. Regular expression, what is the regular expression? There is only one string. When there is only one string, regular expression is going to be ये. Regular expression is going to be ये. Okay, I will give you one more question. Try to answer in the telegram. So sigma equal to a, sigma equal to a, sigma equal to a, and the language is containing two strings a and a. Now draw the DFA, draw the NFA, draw the regular expression, and give it in the telegram channel. Give it in the telegram channel. Okay. Insurance, huh? Passport. आंसर कर दे भाई टेलीग्राम में। ये को एक्सेप्ट करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट ये एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ये। ओके, all of you go to telegram and promise yourself. All of you go to telegram and promise yourself that you will not miss a single class. All of you go to telegram, or in the comments, in the YouTube comments, all of you write one line that I promise I will not miss a single class. I promise I will not miss a single class.
I promise I will not miss a single class. Everyone write this in the comments. I promise I will not miss a single class. Everyone write this in the comments. Everyone write this in the comments. ठीक है? Some people have answered it. सब लोग ने सही किया है. सब लोग ने सही किया है. Everyone write in the comments. I promise I will not miss a single class. ठीक है? Everyone write it. I promise I will not miss a single class. ठीक है? I will make it very easy. I will make it very easy so that you will understand. What should we do? We should accept A and we should accept A, है ना? So we will accept A final state. We will accept A final state, है ना? This state is complete. This state is complete. This state is not complete. So I will after 2 A's, if any number of A's come, I am going to kill them. If any number of A's come after 2 A's, if any number of A's come, I am going to kill them. I am going to kill them. If any number of A's come, I am going to kill them. If any number of A's come, I am going to kill them. Okay? If any number of A's come, I am going to kill them. ठीक है? तो now I want L equal to A, L equal to A, एक काम करते हैं, सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू A, L equal to set of all strings, L equal to set of all strings with L equal to set of all strings with even number of A's. L is a set of all strings with even number of A's. मैं ना आपको I will tell you a secret, किसी को मत बोलना, नोट्स में चुपचाप लिख लेना. If there is a regular language, there can be many DFAs. There can be many DFAs. ये secret है. There can be many DFAs. If you have a regular language, there can be many DFAs, but minimal DFA is always unique. Minimal DFA एक ही आएगा. Minimal DFA is always unique. अगर आप minimal DFA लिखेंगे ना, एक ही minimal DFA आएगा. वैसे ही अगर there is a regular language, बहुत सारा NFAs, there can be many NFAs for a given language. There can be many NFAs for a given language. Many NFAs for a given language. Many NFAs for a given language. Or minimal NFA is not unique. Minimal NFA is not यूनिक. ठीक है? मिनिमल NFA तो इट कैन चेंज. मतलब व्हाट डज दिस मीन? मैं एक मिनिमल NFA बनाया, आप एक मिनिमल NFA बनाएंगे. मैं ये प्रॉब्लम लेके शाहरुख खान को दे देता हूं. I will take the problem and give it to Shahrukh Khan, and Shahrukh Khan will make a different NFA. I will give the problem to Salman Khan. Salman Khan will make a different NFA. I will give it to Amir Khan. Amir Khan will give a different NFA, which means minimal NFA can be distinct. We will not get the same answer for minimal NFA. But if I give a minimal DFA, I will get the same one, you will get the same one, Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan will also get the same one. But only problem is,
How can I approach them to explain TOC? How can I approach Shah Rukh Khan, Salman Khan and Amir Khan to to learn TOC from me? By I have watched lot of their movies, तो ये मेरा movie है, they have to watch my movie also ना, ये बात तो सही है ना, they have to watch my movie too. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है. Now the party is going to start. Okay. Now sigma equal to A. Sigma equal to A. Now we want even number of A's, guys. Even number of A's होना चाहिए. This is a very simple question. ठीक है. तो even number of A's. पहले write the language. L equal to epsilon is even number of A's. Zero number of A's. नहीं तो L equal to AA is 2 A's. AA is 4 A's. So on. है ना. तो I will tell you one more secret. चुपचाप notes में लिख लेना. If a NFA or a DFA has to accept epsilon, if they have to accept epsilon, then initial state should also be final state. ठीक है. For this question, write your answer. In the Telegram channel. Very good. तो सब लोग ने सही दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया है. मैं एक आंसर ले लेता हूं. हर्षवर्धन ने ये किया है कि सर पहले ये आएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसके बाद एक और ये आएगा तो 2 एस बन गया है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, और उसके बाद 3 एस आया है, मैं वापस जाऊंगा और 4 एस में आऊंगा. ठीक है भाई, इधर 0 एस है, इधर 1 ए है, इधर 2 एस है, इधर 3 एस है, इधर 4 एस है, इधर 5 एस है, इधर 6 एस है. आपका आंसर में गलती ये है कि आप एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब इसको भी फाइनल स्टेट बनाओ, आपका आंसर सही है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई द प्रॉब्लम इज दैट this is not minimal DFA. You can minimize it further. Right? You can minimize it further. मतलब initial state I will make it final state. On seeing a it is odd number of A's. On seeing a it is even number of A's. Just see this. On seeing this, what will this accept? It will accept epsilon. It will accept AA. It will accept AA. मतलब all the even numbers are coming here and all the odd numbers are coming here. All the even numbers are coming here and all the odd numbers are coming here. Okay. All the even numbers are coming here and all the odd numbers are coming here. ठीक है. अभी try to answer this. Sigma equal to A, L equal to set of all strings, with odd number of A's. L equal to set of all strings with odd number of A's. अभी L equal to set of all strings with odd number of A's. Odd number of A's होना चाहिए. Rohan, you want me to teach all the subjects in computer science? I am ready. Soldiers, your commander is ready. Are you ready? I am ready to teach all the subjects of computer science. Are you ready to attend all the classes? Are you ready to be punctual? Are you dedicated? Do you want the rank? If you want the rank, just follow me. You will definitely get a rank. I have produced thousands of ranks under 100. Okay. Don't worry, first class में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. Odd number of A's. So we have to
we have to accept odd number of a's. ओके, तो 1a होगा तो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट 1a, डोंट एक्सेप्ट 2a's, इधर 0a's not accepted, 1a accepted, 3a's not accepted, 2a's not accepted, 3a's accepted, 4a's not accepted, 5a's accepted, 6a's not accepted, 7a's accepted, so on, so on. ठीक है, so this is odd number of a's, this is odd number of a's, है ना? I think everyone has given correct answer in the telegram. Some person has given this, who is this? Humble guy. Humble guy has given this. Odd number of a's के लिए humble guy has given ये odd number of a's is not equal to 3 number of a's, है ना? This is wrong. This is wrong. Odd number of a's is not equal to 3 number of a's. आप क्या आंसर कर रहे हैं? ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा है? ये को एक्सेप्ट कर रहा है ना? And then one more guy has given it right. लेकिन मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है. Who is this? प्रकार कुंवर सिन्हा. प्रकार कुंवर सिन्हा ने ये आंसर दिया है. He has given like this. 1a is accepted, 2a's are not accepted, 3a's are accepted. ये सही है भाई. This is right. 1a is accepted, 2a's are not accepted, 3a's are accepted, 4 are not accepted, 5 are accepted. This is right. लेकिन what is the problem? This is not the minimal, है ना? What I want is minimal. This is the minimal NFA, minimal DFA, and also there are no dead states in this. Therefore, this is minimal DFA as well. Minimal DFA as well. This is minimal NFA. And also this is minimal DFA as well. Rishi Reddy, I will start everything. I promise you that I will do all the courses in YouTube for free. I promise you that I will do all the courses in YouTube for free. But only thing is, guys, you should come to the classes and listen to my classes. Okay? Otherwise, what is the fun? I am teaching, and if you are not there, then what is the fun? Okay, whatever subjects I teach, I will name them as ultimate courses. This is ultimate TOC. I will do ultimate compiler design. I will do ultimate CN. I will do ultimate discrete mathematics. Every course will be ultimate. Okay. Okay. तो इसका regular expression क्या है? What is the regular expression for even number of a's? You can directly write like this, right? Regular expression for even number of a's is a star, है ना? A star में what do you get? You get epsilon, you get a. If I put a 0 here, you get epsilon. If I put a 1 here, you get a. If I put a 2 here, you get a, so on. So a star is the regular expression for even number of a's. And for odd number of a's, what is the regular expression? The regular expression for odd number of a's is a star, this is even number of a's, followed by a single a, or a followed by a star, a followed by a star, a star. I will give you one more question, try to answer this. ठीक है? Don't worry, this is your first class. अगर आप, if you are not able to understand something, just hold on. We will do hundreds of examples and entire subject will be very clear. How much time did it happen? We have spent only 1 hour, 1.5 hour, and you have learned so much. Don't worry, it is a 80-hour course. You will learn everything in TOC. Now answer me this question. Sigma equal to A, sigma equal to A, L equal to set of all strings, L equal to set of all strings whose length is multiple of 3, whose length is multiple of 3, whose length is multiple of 3. लेंथ होना चाहिए multiple of 3 होना चाहिए लेंथ.
whose length is multiple of 3. Answer it in the Telegram channel. Answer this in the Telegram channel. Answer this in the Telegram channel. दरवाजे को कुंडी मारो कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दे म्यूजिक गलती से भी रुक ना पाए, टकर टकर जो फील करे वो जाके 2 रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना है जाके अपना बाइस चराए. No one is right. No one is right. संदीप आपका मिनिमल डीएफए नहीं है. संदीप आपका आंसर है ना, वो मिनिमल डीएफए नहीं है. संदीप आपका आंसर है जो भी, वो मिनिमल डीएफए नहीं है. संदीप आपका आंसर मिनिमल डीएफए नहीं है. और सोहम आपका भी मिनिमल डीएफए नहीं है. तो अनिरुद्धा अभी सही है. सब लोग ना थोड़ा सा गलती कर रहा है. मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सही आंसर क्या है. सब लोग थोड़ा सा गलती कर रहा है. मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सही आंसर क्या है. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सही आंसर क्या है. देखो सब लोग ये कर रहे हैं. एक ये आया तो एक्सेप्ट करो. आई थिंक 3s 3s आया तो एक्सेप्ट करो. और इधर ऐसा लगा रहा है. ये सही है भाई, लेकिन लैंग्वेज देखेंगे. लैंग्वेज में एप्सिलॉन होगा. स्ट्रिंग लेंथ 0 इज मल्टीपल ऑफ 3. और ये होगा. नहीं तो a पावर 6 होगा, a पावर 9 होगा, सो ऑन होगा. है ना, है ना. तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. ये सही है, लेकिन ये मिनिमल नहीं है. ये मिनिमल नहीं है. आप और भी मिनिमल कर सकते हो. एप्सिलॉन का एक्सेप्ट करना है तो वैसे ही हमको इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना ही पड़ेगा. एप्सिलॉन का एक्सेप्ट करना है तो इनिशियल स्टेट को हम फाइनल स्टेट बनाना ही पड़ेगा. है ना. और अगर 1 ये आया एक्सेप्ट मत करो, 2 एस आया एक्सेप्ट मत करो, 3 एस आया तो एक्सेप्ट करो. अभी क्या होगा भाई, 0 एस 1 ए 2 ए 3 एस 4 ए 5 ए 6 एस 7 ए 8 ए. है ना, 6 एस 7 ए 8 एस हो गए. तो this state is accepting all these strings whose multiple is 3. This state is accepting all these strings whose multiple is 3. है ना, है ना. ठीक है. तो दिस इज मिनिमल डीएफए. ये डीएफए है, मिनिमल डीएफए. और इसमें डेड स्टेट्स तो नहीं है, तो हमको कुछ एलिमिनेट नहीं करेंगे. तो ये होगा मिनिमल एनएफए. और रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन? The regular expression is going to be ये star. The regular expression is going to be ये star, which is going to give us multiple of 3s. Multiple of 3s. ठीक है. ये तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं. If you want multiple of 4, if you want multiple of 4, then you are going to draw ये
ये दिस इज मल्टीपल ऑफ 4 है ना. मल्टीपल ऑफ 3 में कितने स्टेट्स है? 3 स्टेट्स है. इन द मल्टीपल ऑफ 3 वी हैव 3 स्टेट्स and in the multiple of 4 we have 4 states. If I take multiple of 100, if I take multiple of 100, then how many number of states will be there? 100 states will be there. 100 states will be there है ना. This is a secret. चुपचाप लिख लेना. और जिसको डांस नहीं करनी है, 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 ठीक है. अभी मैं ये क्वेश्चन देता हूं. नंबर ऑफ एज सिग्मा इक्वल टू ए है, सिग्मा इक्वल टू ए है, एल इक्वल टू set of all strings w such that set of all strings w such that number of a's in w is congruent to 1 mod 3. ठीक है. when I divide the number with 3 I should get remainder as 1. टेलीग्राम में आंसर करना है ये, टेलीग्राम में आंसर करना है ये. I should get remainder of 1 when I divide with 3. I should get remainder of 1 when I divide with 3. टेलीग्राम में आंसर कर लेना. भाई ये क्या नाम है? बफून. कुछ अच्छा नाम रखो भाई टेलीग्राम चैनल में. बफून क्या नाम होता है? हाँ, सोहम वेरी गुड. नो वन थोड़ा सा गलती है. नो वन, नो वन देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक. डार्लिंग यू आर राइट. Keep a different name. How can I call you darling? Keep a different name, no? Keep a different name. Alright, by mistake, video got turned on. How to turn it off? By mistake, video got turned on. ठीक है. So some of you have done it. Whenever you divide any number with 3, there will be 3 reminders. 0 will be a reminder, 1 will be a reminder, 2 will be a reminder. What do you want? We want set of all strings which will have a remainder 1, है ना. So we want remainder 1. Whenever I get a 1a, I will go to 1 remainder. Whenever I get 2a's, I will go to 2 remainder. Whenever I get 3a's, I will go to 0 remainder, है ना.
So 0 will come here, 1 will come here, 2 will come here, 3 will come here, 4 will come here, 5 will come here, 6 will come here, 7 will come here, 8 will come here, and so on, so on, so on. ठीक है, ठीक है. So this is the finite automata. I have seen some of the answers. आपने ना some of the answers you have complicated a little bit. So one of the answer that I have seen is, I don't know how to stop this. Let me just. I am facing some problem in Telegram. I am facing some problem in Telegram. 1 minute. My video is being shown somehow. Okay. Everyone has written it right. Everyone has written it right. One person has given a different answer. I am searching for that answer. One person has given a different answer. Everyone, हाँ, this person has given a different answer. इसको देखना. Who is this person? No one. No one is the name of this person. Please change the name. So what he has done is, he has accepted 1A and he has rejected 2A's and he has rejected 3A's and he has accepted 4A's. This is also right. Actually, this is also right. But the problem is, this is not minimal. This is not minimal DFA. This is not minimal DFA. This one is minimal DFA and there are no dead states in this. This one is minimal DFA and there are no dead states in this. So we can call it minimal NFA also. है ना? Now what is the regular expression? When I divide with 3, remainder should be 0. So I will take divide by 3. A star will generate all these strings divided by 3. Now I will add one more A. Now I will add one more A. Now I will add one more A. Then now I'll add one more A. Then I'm going to get remainder as 1. Then I'm going to get remainder as 1. Okay. Almost everyone has answered it correct. Next question, I am going to give you one question. Try to answer this. We are going to start the party. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी तक टाइटल्स चला है, पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर तो शुरू होने वाला है, टाइटल्स खत्म हो गया है. A power n such that n equal to 0 or n equal to 5. A power n such that n equal to 0 or n equal to 5. फटाफट कर देना और टेलीग्राम में आंसर कर देना. ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 5. एन इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 5. फटाफट कर देना और टेलीग्राम में आंसर डाल देना. फटाफट कर देना और टेलीग्राम में आंसर डाल देना. ठीक है.
तो बहुत लोग ने आंसर दिया है n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5। इसके मतलब लैंग्वेज में क्या है भाई? लैंग्वेज में ये इन द लैंग्वेज वी हैव ये एंड ये you have to accept both of them. So zero number of A's don't accept, 1A don't accept, 2 A's don't accept, 3 A's, when you get 3 A's you accept, okay, final state, and 4 A's you don't accept, and then you get 5 A's, and then you get 5 A's you accept. After 5 A's, any number of A's, 6 A's or 7 A's, you just kill them, you just kill them. This is dead state. 7 or 8, you just kill them. This is dead state, this is dead state. Okay, okay, some of you have answered the question, some of you are not able to answer the question. Now I will give you a difficult question. जो भी एक question को, now I am going to give you one question. Whoever answers this question will get a rank within 100. I will give you one question. Whoever answers this question will get a rank within 100. Will you take the challenge? Are you ready for the challenge? Whoever answers this question will get 100, below 100 rank. Will you take the challenge, guys? Are you ready? Are you ready? बोलना कमेंट में कि हम रेडी है। कमेंट में बोलना कि वी आर रेडी। कमेंट में बोलना कि वी आर रेडी। ठीक है, तो L इक्वल टू ये प्लस ये स्टार। ओके, you have to use ये और ये to build the strings. You have to use ये और ये to build the strings. You have to use ये और ये to build the strings. ठीक है ना? ये और ये to build the strings. Now give me minimal DFA and give me minimal NFA, and this is already regular expression. This is already regular expression. I will give you 5 minutes time. Don't answer below 5 minutes. Don't answer below 5 minutes. Don't write anything in the comments. In the Telegram channel, post your answer. I am seeing the Telegram channel. I will collect all the answers and I will analyze them. मैं पूरा आंसर्स कलेक्ट करके I will analyze which one is right. Okay, करना ये।
गाइस मैंने आंसर्स को एनालाइज किया है. In the telegram, no one has answered the right answer. Don't worry. Don't feel demotivated if you are not able to answer a question. In GATE, you will be able to answer the question. This is the first time you are seeing it, so you will get confused. Okay? So, what does AA plus AAA mean? AA plus AAA, what does this mean? This means that you can construct the strings only using 2A's or 3A's. Only using 2A's or 3A's. If I put a 0 here, I will get epsilon because anything power 0 is epsilon. Then what is the smallest string I will get? I will get AA. Then what is the next smallest string I will get? I will get AA. What is the next smallest string I will get? I will get AA. How did I get 4 A's? Because I will use this 2 A's 2 times, 2 A's 2 times, है ना? And then 5 A's. How will I get 5 A's? A. I will use 2 A's one time and 3 A's one time and I will get 5 A's so on, है ना? So in the language everything is present. Epsilon is present, AA is present, AA is present. Everything is present except a single A. So what should you do? Epsilon is present, initial state should be final state. A single A is not present, don't accept it. After that, a double A, 2 A's comes, accept it. And after 2A, any number of A's come, you accept it. Any number of A's come, you accept it. है ना? Any number of A's come, you accept it. All of you please join the Telegram channel RBR Sir PW. RBR Sir PW is the Telegram channel. All of you write the answers in Telegram channel. I will analyze and I will explain your mistakes. Okay? I will analyze your answers and I will explain your mistakes. Okay? So what is this, guys? This is the minimal DFA. Minimal DFA. And in this DFA there are no dead states or trap states. So this is also minimal NFA. This is also minimal NFA. This is minimal DFA as well as minimal NFA. There is one more minimal NFA possible. I told you that minimal NFAs can be many. There is one more minimal NFA possible. I'll show you that. Okay. So you have to accept 3A's. है ना? Put a loop for 3A's. 1A, 2A, 3A. Put a loop for 3A's and then put a loop for 2A's. 1A, 2A. Put a loop for 2A's. Put a loop for 3A's. 1A, 2A and 3A. Put a loop for 3A's and then put a loop for 2A's and then put a loop for 2A's. So 3A's are accepted as well as 2A's are accepted. Now you tell me any string, I will generate it. If I want 2A's, I will go like this. If I want 3A's, I will go like this. If I want 4A's, I will go like this, again go like this, 4A's. If I want 5A's, I will go like this, I will go like this, 5A's. So this is also a मिनिमल NFA. मैं आपको अभी एक सीक्रेट बताने वाला हूं, चुपचाप नोट्स में लिख लेना. चुपचाप सीक्रेट क्या है कि मिनिमल NFA need not be unique. Minimal NFA need not be unique. मिनिमल NFA यूनिक होने का जरूरत नहीं है. इसका मतलब क्या है? There can be more than one. There can be more than one minimal NFA. ठीक है. और एक क्वेश्चन दे दूंगा. आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. चैलेंज लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे आप. आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. कोई कर नहीं पाएगा. चैलेंज है. चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे. कमेंट्स में बोलना चैलेंज एक्सेप्टेड है. आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा. चैलेंज है. विल यू टेक द चैलेंज? मैं एक्सप्लेन करने के बाद आप बोलेंगे कि सर क्या ये इतना इजी है? ये बहुत ही इजी है.
आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चैलेंज एक्सेप्टेड है, चैलेंज एक्सेप्टेड है। ठीक है भाई, अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो इसका ले लेना, अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो इसका ले लेना, ये प्लस ये स्टार। ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, मिनिमल डीएफए फाइंड आउट करना, मिनिमल डीएफए फाइंड आउट करना और मिनिमल एनएफए फाइंड आउट करना। 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, आंसर टेलीग्राम चैनल में लिख लेना। मैं देख रहा हूं टेलीग्राम चैनल, मैं देख रहा हूं टेलीग्राम चैनल। भाई पहले लैंग्वेज को एनालाइज करना, आंसर करने का जरूरत, जल्दी आंसर करने का जरूरत नहीं है। पहले लैंग्वेज लिख लेना, उसके बाद आंसर करना। पहले लैंग्वेज लिख लेना, उसके बाद आंसर करना। हाँ सॉलोमन, प्लस मीन्स यूनियन है। प्लस क्या होता है? प्लस यूनियन होता है। टाइम ले लो, जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करना, लेकिन मुझे सही आंसर देना। एनएफए बनाना तो इजी है, मुझे डीएफए चाहिए। शिवाजी ने एनएफए बनाया है, वेरी गुड, लेकिन मुझे डीएफए चाहिए, लेकिन मुझे डीएफए चाहिए।
आप सब लोग ना एनएफए देने में बहुत इंटरेस्टेड हो, कोई भी डीएफए देने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्यों भाई? एग्जाम में डीएफए पे भी पूछ सकता है। एनएफए तो इजी है, लेकिन एग्जाम में डीएफए पे भी पूछा जा सकता है। तो लैंग्वेज को लिखना, लैंग्वेज में एप्सिलॉन है, इधर अगर मैं 0 डालूं तो एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 2s, 1a नहीं आएगा, 2s नहीं आएगा, 3s आएगा, 4s नहीं आएगा, 5s आएगा, 6s भी आएगा। इसको 2 बार ले लेता हूं, 6s आ जाएगा। और 7s भी नहीं आएगा, है ना? 7s भी नहीं आएगा। और 8s आएगा। ये दोनों को ले लेता हूं एक बार, तो 8s तो आ जाएगा। और 9s आ जाएगा, और 10s आ जाएगा, 11s आ जाएगा, 12s आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करो, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाओ। सिंगल ए को एक्सेप्ट मत करना, डबल ए को भी एक्सेप्ट मत करना, लेकिन 3s को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करो। 4s को एक्सेप्ट मत करना, 5s को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करो 5s को। और 6s को एक्सेप्ट करना है, 6s को एक्सेप्ट कर 6s को एक्सेप्ट करना है। और 7s को एक्सेप्ट नहीं करना है, 7s को एक्सेप्ट नहीं करना है। और 8s आया तो एक्सेप्ट करो, 8 से ज्यादा कितने भी आया तो एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये हुआ है मिनिमल डीएफए, है ना? लेकिन आप मिनिमल एनएफए इससे भी छोटा बना सकते हैं। आप ये मत बोलना कि सर मैं डेड स्टेट को निकाल देता हूं और उसको मिनिमल एनएफए बोलता हूं, वो मत बोलना। ये केस में ना मिनिमल एनएफए और भी छोटा आ सकता है। पहले फाइल लूप लगा देना, पहले फाइल लूप लगा देना, ये 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 फोर लूप हो गए, और फाइल लूप लगा देना, ये, है ना? 5 लूप हो गए, 1 2 3 4, 5 लूप हो गए। और 3 लूप लगाना, 1 2 3 लूप लगाएंगे, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मिनिमल एनएफए, ये बन गया मिनिमल एनएफए। ये है मिनिमल डीएफए, और ये है मिनिमल एनएफए। मिनिमल एनएफए बन गया। लॉस्ट स्टेट इज नॉट डेड स्टेट, सॉरी सॉरी सॉरी। इधर और एक ये आया, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। लॉस्ट स्टेट इज नॉट डेड स्टेट, लॉस्ट स्टेट इज नॉट डेड स्टेट। ओके, ठीक है भाई। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? आज का क्लास कैसे लगा? हाउ इज द क्लास? आज का क्लास कैसे लगा? एक बार कमेंट्स में बता दीजिए कि आज का क्लास कैसे है। फीडबैक दे दीजिए, एक बार फीडबैक दे दीजिए कि आज का क्लास कैसा है। एक बार फीडबैक दे दीजिए कि आपका क्लास, आज का क्लास कैसा है, एंड हाउ इज द जोश, जोश कैसा है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तक पार्टी शुरू नहीं हुई है, धीरे धीरे पार्टी शुरू होगी। ओके, यू विल लव दी टीओसी सब्जेक्ट, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। नाउ लेट अस से सिग्मा इक्वल टू a comma b, let us say sigma equal to a comma b, l equal to w such that mod w equal to even, मतलब you have to accept even number of strings. रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, वी विल टेक रेगुलर एक्सप्रेशंस वेरी सून। ठीक है,
sigma equal to a comma b, L equal to W such that mod W equal to even, which means we have to accept even length strings. मतलब language में क्या होगा भाई, एप्सिलॉन होगा, we have to accept एप्सिलॉन, नहीं तो even length strings को accept करना पड़ेगा, नहीं तो even length strings को accept करना पड़ेगा, है ना, even length strings को accept करना पड़ेगा, so on. ठीक है, आंसर लिख के टेलीग्राम में डाल देना भाई जल्दी फटाफट. ये तो इतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं है, आप फटाफट आंसर टेलीग्राम में डाल सकते हैं. आप आंसर फटाफट टेलीग्राम में डाल सकते हैं. आंसर करके टेलीग्राम में डाल देना. आप आंसर करके टेलीग्राम में डाल देना. टीओसी खत्म होगा 18th ऑफ जुलाई, अगस्त में, 18th ऑफ अगस्त में टीओसी खत्म होगा. आई विल गिव यू लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स. अच्छा है, ये किसी ने किया है. सब लोग सही किया है, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सब लोग ने सही किया है ना. पहले पहले एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जब भी ये आता है जब भी ए और बी आता है, एक लेंथ हो गए, ए और बी आता है, दो लेंथ हो गए, मतलब 0 लेंथ, वन लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, 5 लेंथ, 6 लेंथ, 7 लेंथ एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, ठीक है. अभी ये बोलना, ऑड लेंथ स्ट्रिंग को बोलना मॉड डब्ल्यू इक्वल टू ऑड. ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, मॉड डब्ल्यू इक्वल टू ऑड. फटाफट लिख लेना टेलीग्राम चैनल पे, मॉड डब्ल्यू इक्वल टू ऑड का फटाफट लिख लेना टेलीग्राम चैनल पे. ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स गया है. सोलोमन ने इस ये क्वेश्चन का थोड़ा सोलोमन में थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया है. तो एप्सिलॉन और ये को लिया है और ए कामा बी पे इधर आया है और बी को लिया है और ए कामा बी पे इधर आया है. ठीक है, ये सही है, ये आंसर सही है, दिस इज राइट. मतलब ये देखने के बाद ए या बी देख सकते हो इवन होगा, बी देखने के बाद ए और बी को देख सकते हो इवन होगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मिनिमल नहीं है ना. ये डायग्राम जो है ये मिनिमल एनएफए है ना, ये मिनिमल डीएफए है और ये मिनिमल एनएफए भी है, ये मिनिमल एनएफए भी है. डेड स्टेट नहीं है कुछ निकालने के लिए, तो ये मिनिमल एनएफए भी है. और अगर इसका आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा भाई, ए प्लस बी मतलब वन लेंथ स्ट्रिंग, ए प्लस बी मतलब वन लेंथ स्ट्रिंग फॉलोड बाय ए प्लस बी टू लेंथ स्ट्रिंग. इसका होल स्टार लगा दो, इवन लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगा. ए प्लस बी होल स्टार लगा दो, इवन लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगा. अगर ये भी कंफ्यूजिंग है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पूरा स्मॉलेस्ट इवन नंबर स्ट्रिंग्स को ले सकते हो, ये बी, ये बी बी, और इसको रिपीट करना बहुत बार, पूरा इवन लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगा, पूरा इवन लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगा, है ना. अगर ए लैंग्वेज का ऑड ऑड का करके दिखाओ भाई, टेलीग्राम में ऑड का पोस्ट करना, टेलीग्राम में ऑड का पोस्ट करना.
ऑड नंबर। फटाफट टेलीग्राम में डाल देना भाई आंसर ऑड नंबर का। सब लोग ने कर दिया है ऑड नंबर का, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो ऑड नंबर क्या होगा भाई, ए और बी आया तो वन लेंथ स्ट्रिंग आया, और ए और बी आया तो टू लेंथ स्ट्रिंग आया। मतलब जीरो लेंथ इधर होगा, वन लेंथ इधर होगा, टू लेंथ इधर होगा, थ्री लेंथ इधर होगा, फोर लेंथ इधर होगा, फाइव लेंथ इधर होगा, सिक्स लेंथ इधर होगा, सेवन लेंथ इधर होगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, है ना। तो ये क्या बन गए भाई, ऑड लेंथ स्ट्रिंग बन गया है, ऑड लेंथ स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, ऑड लेंथ स्ट्रिंग बन गया है। अभी एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा ध्यान से करना। सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी अल्फाबेट है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 3 power n, मल्टीपल ऑफ 3 सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मल्टीपल ऑफ 3 का करना भाई, मल्टीपल ऑफ 3 का करना, मल्टीपल ऑफ 3 का करना। नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपका ये लेक्चर का नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एस और मल्टीपल। और इसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिया ना ऑड के लिए। ऑड के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, इवन नंबर ऑफ एस लिखो, इवन नंबर ऑफ एस लिखो, उसके बाद एक और ऐड करना, है ना। ये क्या होगा भाई, ये होगा ए प्लस बी पावर 2n होगा, और उसके बाद ए प्लस बी लिखना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी पावर 2n प्लस 1, मतलब ऑड लेंथ आ गया। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसा मत लिखना, रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। पावर में 2 3 नहीं डाल सकते हो, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ठीक है। ठीक है भाई, मैं बता दूं क्या, टेलीग्राम में बहुत लोग ने सही किया है, ऑलमोस्ट एवरीवन सही किया है। मुझे एक गलत आंसर मिला था। तो ये कौन है भाई, अमित ने ऐसा किया है। अमित का आंसर ऐसा है, अमित का आंसर ऐसा है, ए कामा बी, ए कामा बी और ए कामा बी। अमित आपका आंसर ना दो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 2 को भी एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 2 को भी एक्सेप्ट कर रहा है। हमको क्या चाहिए, स्ट्रिंग लेंथ 3 करना चाहिए। और एक आदमी ने आंसर किया है, बानू ने ऐसा आंसर किया है। बानू का आंसर है, बानू का आंसर है ये है, एप्सिलॉन का एक्सेप्ट किया, करेक्ट है। लेकिन ये को ए कामा बी को एक्सेप्ट नहीं किया, वन ए कामा बी, और दूसरा ए कामा बी को एक्सेप्ट नहीं किया।
लेकिन तीसरा वाला ए कामा बी है ना, तीसरा वाला ए कामा बी है, उसे एक्सेप्ट कर दिया और लूप लगाया इधर से, लूप लगाया इधर से। ये भी सही है लेकिन ये मिनिमल नहीं है। आप इसको यूज कर सकते हो ना, डायरेक्टली लूप लगाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब आप ऐसा कर सकते हो ना, इसको ही यूज करो, 3 लूप लगाओ, ए कामा बी 1 स्ट्रिंग लेंथ 1, ए कामा बी स्ट्रिंग लेंथ 2 और ए कामा बी स्ट्रिंग लेंथ 3। हो गए ना, ये सिंपल है स्ट्रिंग लेंथ 3 के लिए। आपको इतना मुश्किल मतलब इतना लंबा करने का क्या जरूरत है। ये भी सही है लेकिन ये मिनिमल नहीं है। ये भी सही है, ये मिनिमल डीएफए है, ये मिनिमल डीएफए है ना। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना भी इजी है। कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 3 ले लो और स्टार लगाओ, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 3 ले लो, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 3 ले लो और स्टार लगाओ, हो गए मल्टीपल ऑफ 3, हो गए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, आज हमने कुछ मॉडल ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किया है। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक और बार वीडियो को देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। कल ये पूरा रिवाइज करके आना। कल हम मीडियम लेवल क्वेश्चंस में जाएंगे, मीडियम ना इजी। हम क्या कर रहे हैं अभी, इजी क्वेश्चंस को कर रहा है, उसके बाद जाएंगे मीडियम क्वेश्चंस पे, उसके बाद जाएंगे हार्ड क्वेश्चंस पे। और आज पूरा दिन इजी क्वेश्चंस में बिताया। कल today's full class is easy question and tomorrow's class is also going to be easy questions, and tomorrow I will go to medium questions and hard questions. Okay, you will have class on Sunday, Saturday is off. Saturday you will not have a class, but on Sunday you will have a class. Okay, every Sunday you will have a class, but on Saturday you will not have a class. I will tell you the Sunday schedule on Sunday. Okay, I will tell you the Sunday schedule on Saturday, Friday. Okay, I will keep you informed, guys. Please follow us on our Telegram channel and please follow us on our YouTube channel. I will keep everything updated. Okay, so we will end this session here. Do you want to ask anything? You can ask me. 2 minutes is remaining. If you have any questions to ask me, you can ask me. Only 2 minutes is remaining. If you have any questions, you can ask me. Otherwise, I have class at 9 p.m. I have to leave. Okay. Otherwise, I have class at 9 p.m. I have to leave. We will take marathon questions. Actually, plan ये है कि पहले अल्टीमेट टीओसी कोर्स को करेंगे, पहले अल्टीमेट टीओसी कोर्स को करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स होगा एडवांस्ड टीओसी कोर्स। बहुत ही मुश्किल होगा। एडवांस्ड टीओसी कोर्स करेंगे और उसके बाद होगा टीओसी मैराथन, टीओसी मैराथन क्लास होगा। ठीक है, अल्टीमेट टीओसी कोर्स, एडवांस्ड टीओसी कोर्स एंड टीओसी मैराथन कोर्स will all come on YouTube channel. ठीक है, will all come on YouTube channel. And हैंड रिटन नोट्स मैं एंड ऑफ द सेशन में देता हूँ, फाइनली लास्ट में हैंड रिटन नोट्स देता हूँ। ठीक है, at the end of the entire TOC I will give you handwritten notes. Okay guys, thank you. एक काम करना, टेलीग्राम चैनल ओपन करके मेरे लिए क्लास का फीडबैक लिखना। Everyone please open टेलीग्राम चैनल and please write how the class is. Everyone please open टेलीग्राम चैनल and give a feedback about where I can improve. आपको और भी क्या चाहिए वो सब लिख लेना, डिटेल मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आप पूरा लिख लेना कि व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला आपके लिए और क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। एक बार टेलीग्राम चैनल में पूरा फीडबैक लिख लेना कि आपको और क्या चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, प्लीज गो टू टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज राइट इट।